अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका होस्ट एक नई अपडेट के साथ जो जॉब एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो डिटेल अपडेट की तरफ जाने से पहले जो व्यूवर चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट चैनल की मिलती रहे। अब चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। A public sector organization invites application on prescribed proforma given below from suitable candidates having domicile of Khyber Pakhtunkhwa merged district for recruitment against various project posts as per detail given up below। सबसे पहले जो सीट्स है वो है सुपरिटेंडेंट बीपीएस 17 की एक सीट है और मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर 55 ईयर्स है। डिग्री जो चाहिए मास्टर डिग्री होल्डर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड और ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with 10 year of experience in public or private sector। सब इंजीनियर सिविल बीपीएस 16 की 2 सीटें हैं। मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। ऑटो कैड ऑपरेटर बीपीएस 16 की एक सीट है। सो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीएस पीआईटी 4 years from recognized university, AutoCAD certificates from recognized institute with relevant experience, or second class bachelor degree from recognized university with 1 year diploma in information technology from recognized board of technical education, AutoCAD certificate from recognized institution with relevant experience। सुपरवाइज़र बीपीएस 16 की एक सीट है। इसमें 35 साल मैक्सिमम एज है। एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल डिप्लोमा फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सर्वे और एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी यूआरपी सिविल इंजीनियरिंग और एनी रिलेटेड फील्ड विद 2 year एक्सपीरियंस ऑफ लैंड सर्वेइंग sound understanding of GPS GNSS technology। Preference will be given to the candidate who are registered with Survey of Pakistan। कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 16 की 2 सीटें हैं। 35 साल एज लिमिट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 1 year डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। असिस्टेंट बीपीएस 16 की एक सीट है। इसमें 35 साल एज लिमिट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 3 year एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट बीपीएस 16 की 2 सीटें हैं। 35 साल एज लिमिट है। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। A speed of 70 words per minute in shorthand in English, 45 words per minute in typing, knowledge of computer and using MS Word, MS Office with experience the relevant field। टेलीफोन ऑपरेटर बीपीएस 7 की एक सीट है। अप टू 35 ईयर्स तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। एफएफएससी विद 2 year एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। ड्राइवर बीपीएस 5 की 4 सीटें हैं। अप टू 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास विद वैलिड एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस। स्वीपर बीपीएस 1 की 2 सीटें हैं। अप टू 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और लिटरेट होना चाहिए। नायब कासद बीपीएस 1 की 4 सीटें हैं। अप टू 35 ईयर्स तक एज है और लिटरेट होना चाहिए। चौकीदार बीपीएस 1 की 2 सीटें हैं। अप टू 35 ईयर्स और लिटरेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये अवेलेबल। इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, सीरियल नंबर अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर, डोमिसाइल, क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड जो है नीचे तक आना है। पोस्टल एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और एक्सपीरियंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं कि एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद 2 पासपोर्ट साइज 3 साइज फोटोग्राफ, attested photocopies of all relevant document, degree, DMC, diploma certificate, professional certificate, CNIC, domicile, character certificate, experience certificate, professional, personal contact number, and must reach the PO Box number 721, post mail, uh, University of Peshawar within 30 days from the date of advertisement by clearly mentioning the same position of the right envelope corner of the envelope। All the appointment will be made in accordance with the project policy rules and regulations specified by the provincial government of Khyber Pakhtunkhwa। Employment government servants, semi-government organization are required to apply through proper channel। Experience mentioned in the application form must be supported with the document। Only shortlisted candidate will be called for test and interview। Only post-qualification experience will be counted for preparation of merit list। All experience will be counted after the requisite academic qualification। Upper age limit shall be considered by the last date of submission of the application। Relaxation in upper age limit shall be granted in accordance with the prevailing government policy। Incomplete and application received after due date shall not be entertained। Only shortlisted application will be called upon for test interview and shortlisting will be done as per government revised project policy।
Employer reserve the right to terminate the service with cognate reason or as per project requirements or status. Candidate will be required to bring original document at the time of interview. No TADA shall be granted for test and interview. The employer department reserve the right to cancel any or all the recruitment due to one reason or other. The employer reserve the right to delete, defer any of the above position and amend any terms and condition. और ये एडवर्टीजमेंट दी है पोस्ट बॉक्स नंबर 721 पोस्ट मॉल यूनिवर्सिटी पीओ बॉक्स पेशावर और ये डेली मशरक में भी पब्लिश हुई है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पीओ बॉक्स नंबर 721 पोस्ट मॉल यूनिवर्सिटी पीओ बॉक्स पेशावर को भेजने हैं। That's all about today advertisement. Welcome soon. Inshallah, more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, watch, and share our videos and support us. Thank you.